3 to the left hand side. For higher order inequalities, you always want to have 0 on one side of the inequality symbol. Okay, अपना जो higher order inequality का solving का technique है, critical point analysis, that solving technique is all designed with having 0 on one side of inequality. So always get 0 on one side of the inequality. So I transfer this 1 by 2x minus 3 to the left hand side. So we'll have 1 by x plus 5 minus 1 by 2x minus 3 less than or equal to 0. That is our first step. Once we have done that, then make a common denominator on the left hand side. Now that common denominator will be the product of x plus 5 and 2x minus 3. And in the numerator, we'll have 2x minus 3 minus x plus 5 less than or equal to 0. Then for inequalities, what we have to do is convert the denominator to a square and then send it to the right hand side. Okay, so पहले तो यहाँ पे numerator में क्या आएगा? When you subtract 2x minus this x, 2x minus x will give us x, and minus 3 minus 5 will give us minus 8. So numerator में आएगा x minus 8, and that denominator जो में है x plus 5 into 2x minus 3, you multiply numerator and denominator by that same term, x plus 5 into 2x minus 3. ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से ये डिनोमिनेटर में अभी स्क्वायर हो गया है. You don't need to actually write down this step. You can do this step mentally. So just convert the denominator to a square and then send it to the right hand side. The reason for that is when you are sending this denominator to the right hand side, technically you are multiplying both sides by this term. ये जो term है वो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बट हम अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, we know inequalities where if we multiply by a negative number, the sign changes, and when you multiply with a non-negative number, the sign stays the same. But we don't know whether that number is negative or not, and that is why we are converting it to a square and then sending it to the right hand side. When we convert it to a square and then send it to the right hand side, we know square of any real number always is non-negative. So now we can send it safely to the right hand side and say that the inequality will not change, and we will be ending up with x minus 8 into x plus 5 into 2x minus 3 less than or equal to 0. The further process we all know, it is called as critical point analysis. So what you do is first identify the critical points. Critical points are basically the values of x at which this term becomes equal to 0. ये expression मुझे अगर equal to 0 करना है तो x के values क्या लेने हैं? That those are called as critical points. So here the critical points are 8. For this term to be equal to 0, x needs to be 8. For the second term to be equal to 0, x needs to be minus 5. And for this third term to be equal to 0, x needs to be 3 by 2. तो ये जो तीन वैल्यूज है x के, you take any out of these values and substitute on the left hand side, that product will be 0. ये ब्रैकेट में से कोई भी एक टर्म 0 हो गया तो product will be 0. So these are critical points at which the product becomes equal to 0. The next step, AD, we are transferring this term to the right hand side. When you are transferring a term to the right hand side, you are technically multiplying both sides by that number. वो x plus 5 into 2x minus 3 से हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? अभी inequalities में when you are multiplying by some number on both sides, the sign changes if you are multiplying by a negative number. Nitish Maurya, please keep your mic on mute. Okay. So now, since we don't know whether this term is positive or negative, उसको square में convert कर दो. उसको square में convert करके, then if you take it to the right hand side, we know square of a real number is always non-negative. Okay. So that is the mathematical reason why we convert to a square and take it to the right hand side. This is something that you must have been taught in the very basic class of inequalities, right? Whenever you're transferring denominators to the right hand side,
You convert it to square and then transfer, because mathematically when you're multiplying by some number for an inequality, whether the number is positive or negative is going to affect the inequality symbol. Okay. And the further process is called critical point analysis, where we take the number line and plot those critical points on the number line in correct order. So the smallest one out of these is -5. Then you have 3/2. And then you have 8. So that divides the number line into 4 parts. So now you check the sign of this term on the left hand side. जो left hand side पे expression है, हमें बस उसका sign check करना है, because we are comparing with 0. That is the reason why we want 0 on one side. When you are comparing something with 0, you just need to check whether that term on the left hand side is positive or negative. So now in those 4 ranges that are formed of the number line, you check the sign of that term on the left hand side. So now that first range is numbers more than 8. So you consider numbers more than 8 and check ये term जो left hand side पे वो positive आएगा कि negative आएगा. So if you take a example value of x, let's say 10, x को 10 ले लिया, you take any number more than 8 and test. So x को अगर आप 10 लेते हो, 10 minus 8 will be positive, 10 plus 5 will be positive, 2 times 10 minus 3 will be positive. ये left hand side के तीनों terms positive आने वाले. Okay, you take any value of x more than 8 and test. All these terms are positive. That means the product on the left hand side will be positive. So you take any value more than 8 and test. आपको left hand side एक positive number मिलेगा. And further what we know is at every critical point the sign alternates. So if you take a number between 3/2 and 8. So for example, if you take x as 4 and test, x को 4 लिया, इस range में कोई value लेके test करोगे, so 4 minus 8 will be negative, 4 plus 8 will be positive, 2 times 4 minus 3, 8 minus 3 हो जाएगा positive. तो यहाँ का भी product आपको negative मिलेगा. So this will be a negative value for that expression. और ऐसे आपको sign को बस alternate करना है. So you don't need to keep on actually testing. So you just need to keep on alternating the sign. ठीक है. So next range में वापस positive होगा. So between -5 and 3/2 you'll get positive expression. और यहाँ पे वापस negative होगा. Clear? This is your critical point analysis that we have seen in the basics class. Now our final question is to find where this expression is less than 0. Less than 0 मतलब हमें वो negative चाहिए. So these parts will be your answer. Okay? Less than or equal to 0 का equal to 0 चलेगा means the critical points themselves are allowed. But be very careful. See, x plus 5 is in the denominator for the original expression. Original expression has x plus 5 in the denominator. So x cannot take the value -5. क्योंकि हमें पता है mathematics में denominator can never be 0. Similarly, 2x minus 3 cannot become 0. So x cannot be 3/2. So x cannot take those values because these denominators become equal to 0. So x cannot be -5, it cannot be 3/2, but it can be 8. 8 itself is allowed. So your final range for x will be from -infinity to -5, excluding -5, union 3/2 to 8, excluding 3/2, but including 8. So this is your entire process of solving these kind of questions. So now -infinity से लेके -5. So -5 से छोटे नंबर हमें चाहिए. -5 से छोटे नंबर, so you can see option A and B have that x is less than -5. And the second range that we want is 3/2 to 8, including 8, but excluding 3/2, which is present in option B. 3/2 to 8, including 8. So option B is the answer. Okay. Now the entire reason that I showed you this process is if the question was given without options, तो आपको ये process पता होना चाहिए. So for example, अगर question ऐसे पूछा होता, instead of asking you for the range, if the question was asking how many positive integers fit the inequality, how many positive integers, तो जो आपको inequality दिया है उसमें fit होने वाले positive integer कितने हैं,
and it was a theta question. So then you will need to be able to solve in this fashion. And now positive integers, you can see 3/2 से बड़े number 8 तक, तो 3/2 होता है 1.5. So 1.5 से बड़े number मतलब 2 से लेके 8 तक के integers चलेंगे. So positive integers पूछा होता तो it will go from 2 to 8 and there will be 7 such integers. Amit, we are not including 3/2 because our original expression has 1 upon 2x minus 3. x को अगर आप 3/2 लेते हो तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा ना. मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0. दैट इज व्हाई x कैन नॉट बी -5, it cannot be 3/2. Okay, so this is how you solve these kind of questions. So if it was asking how many positive integer solutions, answer would have been 7. But now if the question is actually asked with options, the alternate way of doing this question very quickly will be testing the options. So अगर ऐसे ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आता है, ये CAT 24 में तो ऑप्शन के साथ था. So this question then can be done in 30 seconds by simply testing the options. Okay, so when you are testing the options, what you can notice is ऑप्शन A में x का वैल्यू 3/2 से बड़ा का है. अभी 3/2 से बड़ा, but they have not given you what is the upper limit. That means it can go any number up to infinity. Same way option D is x greater than 3/2, so it can be any number up to infinity, whereas the other two options are limiting x only up to 8. So now to eliminate 2 out of these 4 options, what we'll do is take a number which is more than 8 and see whether it works or not. So अगर हमने x का number more than 8 लेके टेस्ट किया, if it works, तो option A or D will be your answer. If it doesn't, then B or C will be your answer. So test x का value कुछ तो 8 से बड़ा, so let's say 10 लिया. So if I take x as 10, the left hand side will become 1/15, and the right hand side when you take x as 10 will be 1/17. 2 into 10 minus 3 होता है 17. अभी इनमें बड़ा नंबर है 1/15. 15 अगर छोटा है 17 से, रेसिप्रोकल लेने के बाद 1/15 will be bigger than 1/17. And that means what? It is not fitting the inequality. हमें जो लेफ्ट हैंड साइड का छोटा नंबर चाहिए था, वो लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा नंबर आ रहा है. So x equal to 10 does not work. And if x equal to 10 does not work, option A cannot be our correct answer, D cannot be the correct answer. तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं. उसके बाद आप देखोगे अभी B and C जो बचे हैं, उसमें B के लिए x has to be any number less than -5, whereas C is saying that x can be a value between -5 and 3/2. So take a value and test उनमें से कौन सा ऑप्शन फिट होगा. So for example, if you take x as 0, x को अगर 0 लिया तो वो ऑप्शन C का पार्ट है. ऑप्शन C में 0 आ रहा है, राइट, -5 to 3/2, बट ऑप्शन B में वो नहीं आता है 0. So 0 से लेके टेस्ट करो. So if you take x as 0, your left hand side will become 1/5 and right hand side is 1/-3. Always positive numbers are greater than negative numbers. So again it is not fitting the inequality. 0 लिया तो वो inequality जो हमें चाहिए उसमें fit नहीं हो रहा है. So option C cannot be the answer. So B has to be the answer. So this way in 30 seconds you can test. What is the domain? Raj, हमने वही तो निकाला. This is the domain. Okay. What we have found here is the domain. क्या x का वैल्यू चलेगा? ये एक्सप्रेशन के लिए x का वैल्यू जो चलेगा, that is the domain, the input that you can give. That is what we have found. ठीक है. So if anyone wants screenshot of this slide, quickly do so. I hope everyone has understood how to do it using options. So option के साथ ऐसे question आते हैं, तो don't go for this technique. Check the options and get the answer quickly. But you should know the technique if question is asked like this: how many positive integers fit? Done. Second slide, if anyone wants screenshot, quickly do so. Chalo, next question. Try this out quickly.
तो अगर आपको स्क्वायर रूट का रिजल्ट रियल चाहिए, स्क्वायर रूट का रिजल्ट रियल आने के लिए द नंबर अंडर द स्क्वायर रूट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट होता है नॉन रियल. तो ये जो स्क्वायर रूट के नीचे जो नंबर है, ये टर्म, दिस टर्म हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. So we can say log to the base e of 4x minus x square by 3 has to be greater than or equal to 0. ठीक है. Now logarithm का रिजल्ट 0 कब आता है? कौन से नंबर का log 0 होता है? We know log 1 is 0, correct. log 1 to any base होता है 0. Okay, so base e हो या कोई और नंबर हो, so log 1 to any base is 0. So if you want the log result to be greater than or equal to 0, ये जो term है, this bracket में जो term है, has to be greater than or equal to 1. So now we can say 4x minus x square by 3 has to be greater than or equal to 1. Logarithm का result to become equal to 0, that term had to be 1. For logarithm result to be greater than or equal to 0, this term itself has to be greater than or equal to 1. And now solve this. So we can say 4x minus x square has to be greater than or equal to 3. We have multiplied both sides by a positive number 3. So the inequality has not changed. Now you can transfer all the terms to the right hand side and get x square minus 4x plus 3 is less than or equal to 0. Okay. अभी इसका फैक्टराइजेशन अगर किया, we need product 3 and sum minus 4. Product 3 sum minus 4, the numbers are minus 3 and minus 1. And then when you do critical point analysis, the critical points for this will be 1 and 3. So if you take a number more than 3, if you take a number more than 3 and test in this expression, you'll get a positive result. 3 से बड़ा नंबर लेके टेस्ट करो तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे, तो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. So between 1 and 3 it will be negative, and for numbers less than 1 it will be again positive. We want this expression less than or equal to 0. Less than 0 मतलब negative part will be our answer. तो x का वैल्यू होना चाहिए 1 से लेके 3 तक, इंक्लूडिंग 1 and 3, because we want equal to 0 भी चलने वाला है. Equal to 0 चलेगा तो 1, 3 themselves are also allowed. So x का रेंज होगा from 1 to 3 inclusive. So option C is the answer. Here again you could have done this by testing the options. So if you look at the options, there are two options which include 0. Option A में 0 is part of it, -3 से लेके +3 तक जा रहा है. ऑप्शन डी भी -1 से लेके +3 तक, मतलब 0 उसमें प्रेजेंट है. सो दो ऑप्शन में 0 प्रेजेंट है, दो ऑप्शन में नहीं है. सो फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टेस्ट 0. अभी इसमें 0 लिया, x को 0 लिया, तो न्यूमरेटर विल बिकम 0. ओके, व्हेन यू टेक x as 0, दिस न्यूमरेटर इज 0, and log 0 we know is not defined. Log 0 not defined होता है. So immediately options A and D are eliminated. Then to test between options B and C, एक ऑप्शन 2 तक ही लिमिटेड है, दूसरा ऑप्शन 3 तक जा रहा है. So take x as 3 and test. If it works, option C is the answer. If it doesn't, then option B is the answer. So take x as 3 and check. So when you take x as 3, the numerator is going to become 12 minus 9. 12 minus 9 हो जाता है 3, and 3 upon 3 से बन जाएगा 1. This term will become 1 when you take x as 3. And log 1 बनेगा 0, and root 0 is real. So वो चलेगा. So after checking the options, you will see C is the correct answer, B is not. Yes, Raj, 4x minus x square should be greater than or equal to 0. Not positive 0 भी चलेगा. Why positive? हाँ सॉरी, या log के लिए 0 नहीं चलेगा, करेक्ट. ये टर्म, दिस टर्म अंडर द स्क्वायर रूट 0 चलेगा. 4x minus x square, वो log को जो इनपुट जा रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, करेक्ट.
for square root we can take 0 as the input, but for log the input has to be positive. Okay, so any doubts, anyone? Those who want screenshot of this, quickly do so. Done. Try this question, cat 23. Raj, see 4x minus x square पॉजिटिव होना ही चाहिए ऑफ कोर्स, बट वो 3 से ही बड़ा होना चाहिए ना. 3 से छोटा होकर कैसे चलेगा? If this number becomes something like 2, 2 is still positive, but वो 3 से छोटा हो गया, तो you'll get log of fraction, and log of 2 by 3 to the base e will be what? Will be negative, no? E क्या होता है? E is 2.718. So 2.718 का पॉजिटिव पावर लिया तो 2 by 3 नहीं आएगा ना. 2 by 3 छोटा नंबर है उससे, तो छोटा नंबर आने के लिए आपको टेक अ नेगेटिव पावर, तो दैट विल नॉट वर्क. दैट विल गिव अस स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर ना. So 4x minus x square simply positive is not enough. It has to be greater than or equal to 3. Have you not understood the reasoning that we made? देखो स्क्वायर रूट के नीचे जो टर्म होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर रिजल्ट टू बी रियल. रियल नंबर, नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट रियल नहीं होते. तो स्क्वायर रूट के नीचे जो टर्म है वो हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए. दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप इन द रीजनिंग. अभी हमें वो स्क्वायर रूट के नीचे का जो टर्म है, मैंने इधर अलग से लिखा भी है उसको, वो हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करवाना है. हमें पता है log of 1 होता है 0, log 1 is 0, बट हमें तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए. मतलब ये टर्म जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चाहिए. सो सिंपली पॉजिटिव इज नॉट इनफ, वी वांट इट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ओके, एंड 4x minus x square upon 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होने के लिए we will need 4x minus x square to be greater than or equal to 3. ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, इक्वल टू भी चलेगा. सिंपली ग्रेटर देन होता तो फिर वो 1 and 3 को इंक्लूड नहीं करते. ऐसा अगर सिंबल होता तो 1 and 3 को इंक्लूड नहीं करते, बट सिंस इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 तो इंक्लूड करना ना. और वो क्यों चलने वाले, इसका रीजनिंग अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग. स्क्वायर रूट के नीचे का जो टर्म है वो 0 भी चलेगा ना. रूट ऑफ 0 इज अ रियल नंबर. रूट 0 लोगे तो इट इज 0 विच इज अ रियल नंबर. सो ये स्क्वायर रूट के नीचे का टर्म है वो 0 भी बन के चलेगा. It is not necessary that it has to be positive. It can be also equal to 0. So since it is equal to 0, that input that we are giving to the logarithm has to be greater than or equal to 1. And so it is greater than or equal to, इसलिए वो critical points themselves are also allowed. Okay, चलो next. Try this out. This is cat 23 का question. How many integer solutions are there for this equation? Now there are no options or anything that can be utilized. These kind of questions you need to know the techniques of solving. कितने सारे इंटीजर सॉल्यूशंस है इसके लिए, चेक करो. एक ही है. अमित एंड शुभम आर सेइंग ओनली वन. और यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, मतलब वी विल नॉट इवन नो वेदर वी आर गोइंग करेक्ट और रॉन्ग, राइट? बॉक्स में क्या आंसर डालने वाले हो, टाइप दैट. आई एम नॉट आस्किंग व्हाट इज द सॉल्यूशन, आई एम आस्किंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस.
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको बॉक्स में टाइप करना है, सॉल्यूशन क्या है ये बॉक्स में नहीं टाइप करना। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 है क्या? द आंसर इज रॉन्ग। चलो चेक करते हैं कितने सारे सॉल्यूशंस है। नाउ देयर इज वन सॉल्यूशन दैट फिट्स दिस इक्वेशन ऑब्वियसली, जो आई होप मेनी ऑफ यू हैव कम अप विथ। ये देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि इसका एक सॉल्यूशन क्या है, 0। आपने अगर x को 0 लिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 0। मॉड्यूलस ऑफ 0 होता है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट बनेगा 0, राइट हैंड साइड भी 0 बन जाएगा। It will fit. So one obvious solution to this equation is x equal to 0. Okay, so एक solution तो already मिल गया कि x is 0. So one solution is x equal to 0. अभी ये 0 के अलावा क्या solutions है, let's find that. So now we have already taken that as one solution. Now under the assumption that x is non-zero, let's find the other solutions. So for other solutions, let x be a non-zero value. So now, for solving this modulus wale equations, what one technique we can do is we replace modulus x with some other variable. Let modulus x be equal to some variable, let's say a. And if modulus x is taken as a, squaring both sides, we can say x square is equal to a square. Modulus x agar a hai, so x square will be equal to a square. Doesn't matter whether x is a positive number or negative number. Square करने के बाद जो magnitude मिलने वाला है, a का square भी वही होगा. ठीक है? So if modulus x is a, then x square is a square. And now solving that given equation, modulus x के जगह पे आ जाएगा a, x square के जगह पे आ जाएगा a square plus 1 is equal to right hand side पे x square की जगह पे आएगा a square. Since we already know x is non-zero, we can divide both sides by a. A also will be non-zero. अगर x non-zero है, a also will be non-zero. And we can divide both sides by a. So when you divide both sides by a square right hand side से निकल जाएगा. And you get 2a square plus 2 is equal to 5a. Take 5a to the left hand side, I'll get 2a square minus 5a plus 2 equal to 0. Now when we solve this quadratic equation, we need two numbers whose product is 4. 2 into 2, product चाहिए 4 and sum चाहिए -5. Product 4 sum -5 ऐसे numbers होते हैं -4 and -1. To get the roots, to get the a values, you have to divide by -2. यहाँ पे a square का जो coefficient 2 है, हमें -2 से divide करना होता है. So जो a के values आएंगे, will be -4 by -2, -1 by -2. So a is 2 or half. Now if a is taken as 2, mod x is 2. A itself is mod x. So now we have got mod x is equal to 2. And mod x अगर 2 है तो x can be plus or minus 2. सेकेंड केस में mod x बन जाएगा हाफ. a अगर हाफ है तो mod x is half. So x will be plus or minus half, but we are looking only for integer solutions. So plus half या minus half is not an integer solution. तो यहां पे आपको कोई integer नहीं मिलेगा. तो इंटीजर सॉल्यूशन आपको 3 मिलने वाले हैं. 0 है, +2 एंड -2. 0, 2, -2 ऐसे 3 इंटीजर सॉल्यूशंस है. So the answer to the question is 3. Good, correct. Many of you then correctly have typed 3. That is the answer. So 0 is a solution. AD, can you explain about 0? What part you have not understood about 0, you tell me. ये इक्वेशन में 0 आपने प्लग किया तो आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल रहा है चेक करो, राइट हैंड साइड क्या मिल रहा है चेक करो.
Is it not equal? इक्वेशन में x को 0 प्लग करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनता है? व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ 0? 0, राइट? तो ये लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट बन जाएगा 0, राइट हैंड साइड 5 into 0 स्क्वायर भी बन जाएगा 0. So 0 is equal to 0 ना, so it fits the equation. So one solution obviously is 0. हाँ, तो वही ना, मतलब it fits the equation, right? So 0 is a solution ना, 0 fits the equation. हाँ, तो 0 एक solution है, दूसरा solution हमने बाकी उस आगे सॉल्व करके निकाला है +-2. हाँ चलेगा राज, यू कैन अज्यूम पहले x को पॉजिटिव नंबर है एंड सॉल्व. सो मॉड x विल बी सिंपली x. फिर अज्यूम करो x को नेगेटिव नंबर एंड मॉड x विल बी -x. वैसे सॉल्व कर लो, नथिंग रॉन्ग इन दैट. आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस टेक्निक कि जब x स्क्वायर भी है और मॉड x भी है, यू कैन सिंपली रिप्लेस मॉड x विद a एंड x स्क्वायर विद a स्क्वायर, एंड दिस वे इन वन शॉट यू कैन सॉल्व rather than creating two cases. Done? So those who want screenshot of this slide, quickly do so. ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ट्राई दिस आउट. अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूलस. सी इफ यू आर एबल टू गेट द आंसर. फाइव 45. Arnav says 5. APK is saying 45. 15. चलो चेक करते हैं how to solve these kind of questions. So now when you have these kind of equations in terms of modulus, you have mod x, mod y, both things present. The standard technique of solving these questions is to assume 4 cases. So पहला case, assume x is greater than or equal to 0, y also is greater than or equal to 0. x नेगेटिव नहीं है, y भी नेगेटिव नहीं है. x एंड y दोनों नंबर नेगेटिव नहीं है. अगर नंबर नेगेटिव नहीं है तो मॉड्यूलस ऑफ द नंबर विल बी नंबर इटसेल्फ. सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस इज mod x is equal to x itself if x is greater than or equal to 0. Modulus of a non-negative number is the number itself. And mod x बनता है minus x if x is less than 0. आप किसी नेगेटिव नंबर का मॉड्यूलस लेते हो तो इट बिकम्स माइनस ऑफ दैट नेगेटिव नंबर. फॉर एग्जांपल मॉड्यूलस ऑफ 7 इज 7 इटसेल्फ. मॉड्यूलस ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ. ये दोनों केस में वो पहला डेफिनेशन अप्लाई हो रहा है. बट इफ यू टेक मॉड्यूलस ऑफ -5, इट बिकम्स माइनस ऑफ -5. सिंस -5 इज नेगेटिव, मॉड्यूलस उसके आगे एक और नेगेटिव नंबर साइन लगा के उसको पॉजिटिव कर देता है. सो व्हेन यू इनपुट अ नेगेटिव नंबर, you get a positive output. That is a basic definition of modulus. So पहले केस में हम assume कर रहे हैं कि ये दोनों नंबर नॉन नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस will just keep them as is. तो जो पहला इक्वेशन है will become simply x plus y. Modulus of x will become simply x plus y is 15. That is 2x plus y 15 है. और जो दूसरा इक्वेशन है modulus y will be simply y itself. So that second equation
will become x plus y minus y equal to 20. So basically you'll get x as 20. अभी आपने x को 20 सब्स्टिट्यूट किया है पहले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 40 प्लस y इज 15 एंड y यहां से आपको -25 मिलेगा, जो नहीं चलेगा. Our assumption is कि x and y both are non-negative, तो अभी y नेगेटिव आके कैसे चलेगा? ये assumption ही हमारा गलत हो रहा है यहाँ पे. So this solution is not accepted. तो ये पहला केस गलत है. Second case, let's assume both are negative numbers. If you assume both are negative, x less than 0 है, y भी less than 0 है. So now according to this definition, modulus will become minus of that number. नेगेटिव नंबर का मॉडुलस होता है माइनस ऑफ द नंबर. तो जो पहला इक्वेशन है वो मॉड x बन जाएगा माइनस x. ओके, x खुद नेगेटिव है तो मॉडुलस x विल बी माइनस ऑफ दैट नेगेटिव नंबर. आगे प्लस x प्लस y है which will give us 15. So basically y is 15. And second equation बन जाता है x minus y is 20. अभी ये हो जाएगा x minus 2y is 20. बट ये आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं. इनफैक्ट हमारा अजम्पशन है कि x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, तो y 15 है, वहीं पे आप रुक सकते हो. y 15 कैसे चलेगा? हमने अज्यूम ही किया है कि वो दोनों नंबर नेगेटिव है. सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. थर्ड केस, सपोज वी अज्यूम x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव. x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव. तो अभी ये जो पहला इक्वेशन है, मॉड्यूलस ऑफ x विल बिकम माइनस x प्लस x प्लस y इक्वल टू 15. और इससे आपको y 15 मिलेगा विच इज ओके. y अभी पॉजिटिव है इस अजम्पशन में. एंड आवर सेकेंड इक्वेशन विल बी x, y पॉजिटिव होने की वजह से मॉड y विल बी सिंपली y minus y equal to 20. This will give us x as 20. बट हमने तो अज्यूम किया x is negative. यहाँ पे x 20 आया तो this does not work out. Okay? So ये सारे केसेस गलत है. The fourth case that is remaining to be tried is x is positive, y is negative. So if you assume x is positive and y is negative, your first equation will become x plus y. Mod x will be simply x since x is positive. So this will give us 2x plus y is 15. And the second equation, since y is taken as negative, that mod y will become minus y. So you get x minus y is 20. So you get x minus 2y is 20. Okay? So solve these equations, see what you are getting. तो इनको अगर सॉल्व करोगे, if you multiply this first equation by 2 and add that to the second equation, इसको into 2 करके ये second equation में add करोगे, you'll get 4x plus x, that is 5x is equal to 50. So x आ जाएगा 10. Once you know x is 10, then from there you can find y value is minus 5. Okay? X is 10, y is minus 5. And those are perfectly valid. X positive चाहिए, y negative चाहिए. So यहाँ पे आपको बराबर मिल जाता है. So x is 10, y is minus 5. So our question was to find x minus y, which will become 10 minus 5, which is 15. Good, correct. So all those who answered 15, that is the correct answer. So this is how you solve these kind of questions. You assume cases and quickly figure out the answer. Same question type was present in CAT 23 as well as 22. Last 3 साल consecutive आए हैं ये question types. Not in every slot, of course, one of the slots. So CAT 22, 23, 24. तीनों साल ये पूछा हुआ है question. ठीक है? So those who want screenshot, quickly do so. This was the previous slide where I showed you the definition.
चलो नेक्स्ट. करेक्ट नहीं, हाँ 10 माइनस माइनस 5 हो जाता है 15, राइट? What is your question? I did not understand. 10 minus minus 5, what you have typed is correct. It is equal to 15. Okay. So this was CAT 21 slot 3 question. Interesting question. See if you are able to do this by trial. The easiest way to do this question is by trial. Many times modulus based questions, if the numbers involved are not very big, you can think of doing it in terms of trial. हमें पता है कि ये दोनों टर्म 5 से छोटे हैं, तो चेक करो क्या नंबर्स फिट होने वाले हैं. We know that m and n have to be integers. How many distinct pairs of integers satisfy the given equation? So we want integers that are fitting this inequality. Where 20 minus 15, what you are asking? 20 minus 15? केस नंबर 1 का अपना assumption क्या था? x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, ना? उसमें जो solution आया है वो valid है क्या? y का वैल्यू उसमें -25 आया है, वो कैसे चलेगा? हमारा assumption के हिसाब से होना चाहिए ना. AD, are you listening to the solutions? Why we rejected that solution? Because our assumption was